I will now invite keynote address from Mr. Justice Mansoor Ali Shah. The last time he addressed us at the Sindh High Court Bar dinner, the annual dinner, people were raptured and they still speak of him, and I'm grateful for him for taking time out and coming here straight from the airport. Kindly give your hands to Mansoor Ali Shah Sahab. मेरी किस्मत कुछ ऐसी है कि एवरी टाइम आई कम अप टू द रोस्टर वो खाने की तैयारी हो गई होती है एंड एक अजीब सी कैफियत मुझे चेहरों पे नज़र आ रही होती है कि इसको सुनना है या खाने के लिए चलें. सो वंस अगेन आई एम लैंडेड इन द सेम सिचुएशन बट यू हैव टू बेयर विद मी फॉर जस्ट अ शॉर्ट वाइल. जस्ट वांट टू शेयर फ्यू आइडियाज़ विद यू. जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की तो मुझे बातें बहुत अच्छी लगी. आई एम सो इम्प्रेस्ड. ही हैज़ सच अ गुड हैंडल ऑन द सिस्टम. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. आई वर्क विद नंबर ऑफ जजेस बट द वे जो इनकी डेप्थ है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बहुत खुशी हुई है. एंड आई एम श्योर सिंध हाई कोर्ट इज़ इन अ वेरी गुड हैंड्स. बिग हैंड. लेट मी जस्ट सेटल डाउन हियर. सो यू सी, let me start off by saying that nothing is more powerful than an idea whose time has come, says Victor Hugo. और मेरा ख्याल टाइम आ गया है टेक्नोलॉजी को जस्टिस सिस्टम को ड्राइव करने के लिए. आई मीन देयर इज नो बैकिंग आउट. जस्ट टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर एंड टेक्नोलॉजी को हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हमें आगे ले जाना है. जस्टिस सिस्टम टू माई माइंड कैन नॉट फंक्शन एनी मोर विदाउट टेक्नोलॉजी. इसके बगैर आगे चारा ही नहीं है और हमें इसको समझना है और इसको आगे लेके चलना है और बढ़ाना है. आई एम एक्चुअली सो इम्प्रेस्ड विद द यंग क्राउड हियर. आई फील सो रिफ्रेश्ड frankly after seeing those 3 presentations, so rejuvenated कि मेरी तो भूख ही चली गई है. तो आई एम श्योर आपकी भी चली गई होगी और आप मेरी बातें सुनेंगे कुछ देर. आई एम genuinely very impressed with all this that's happening here and this forum T4JF which is bringing everybody together. I'm very happy. हमारे टाइम्स में ऐसी बातें नहीं थी और मुझे बहुत खुशी है कि ये हो रहा है और ये होना चाहिए. इसमें और टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और सोच आनी चाहिए, और आइडियाज़ आने चाहिए. मुझे I got the chance to look at some of the apps that are there now, which this forum is also promoted earlier. For example, quoting the law, Qanun Daan. Let me name these because I'm very impressed with them. Insaf Camp, Mohtasib PK, then Vakil Online, which you just heard, Benchbook PK, GatherSense.com, Lawher.pk, which is about women and the lawyers, Law Practice, which you just saw, ParkSign.pk, और इसकी तारीफ में मैं नहीं जाता. Everybody is doing and putting in a contribution which is very good, and this is absolutely encouraging. लेकिन मैं जिस एंगल से इस चीज़ को देख रहा हूँ, the Supreme Court or as judges and having looked at the system and having looked at reforms for some time now, मुझे लगता है कि these are appetizers, you see, and we've missed out on the main course. Main course बड़ा ज़रूरी है. ये सारे जो apps आप देख रहे हैं and all these things that we're talking about are actually going to bring people to the courthouse. Dispute resolution system हम चलाते हैं ना, justice system is dispute resolution system, and you bringing people to the courthouse. ये सारी चीज़ें वकील आपको मिल जाएगा, आपके problems होंगे, उनको पता चलेगा, networking हुई है, awareness हो रही है, people are finding about their rights. So what will happen? This will generate litigation, has to. People will find out about their rights, so they will go to the courthouse. The whole story is how to make the courthouse more efficient, more smart, more intelligent, you see. So that's the story. To me, courthouse/justice system is the same thing. Courthouse को कैसे effective करें? वो जो 20-20 साल से मुकदमे पड़े हुए हैं और चलते नहीं, और it's a cliche now, the generations are lost, कि मुकदमा शुरू हुआ और ख़त्म नहीं हो रहा. ये सारी जो ऐप्स की हम बातें आज कर रहे हैं, ये लोगों को कोर्ट हाउस में लाएंगी. कोर्ट हाउस का क्या करना है? एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल दीज यंग ब्रेन्स हियर. इनोवेटर्स बैठे हुए हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं. द नेक्स्ट जनरेशन इज हियर फुल ऑफ आइडियाज, बीमिंग विद आइडियाज. हम लोग तो, आई मीन, वी हैड आवर ईयर्स
But आप लोगों को देखते हैं तो बहुत एनर्जी नजर आ रही है, and this energy needs to be harnessed. And my request today is कि let's start looking at this courthouse, which deals with the life of an ordinary person. वो आम आदमी जो जाता है वो कोर्ट हाउस में जाता है और उसको कैसी सहूलत दे सकते हैं, उसके बारे में मैं बात आपके साथ करना चाहता हूँ. हम ये भी क्लीशे सुन सुन के तंग आ गए हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड. But बहुत टाइम हो गया है. We need to move on and try to sort of reconfigure this and remodel the way courthouse has to function. And I'm going to share some ideas on that with you. So, what's the ultimate purpose? हम ये सारी exercise क्या करने निकले हुए हैं? किसके लिए करने निकले हुए हैं? एक हम चाहते हैं कि the justice system, yeah, I keep repeating the courthouse as a term, इसको हम efficient, अफोर्डेबल, इंटेलिजेंट और स्मार्ट बना सकें, एफिशिएंट बना सकें, जल्द से जल्द फैसले लोगों के हों. इससे ये वन सिंगल ऑब्जेक्टिव मेरी नज़र में है. एज फार एज माई टाइम ऑन द बेंच इज कंसर्न, आई हैव वन एजेंडा, एंड दैट इज that a case that starts off at a trial court must end at the Supreme Court maximum 6 months. But chale, abhi initial phase mein 1 year. You do this and the country is going to change. It will revolutionize Pakistan. If you start off at a trial and you finish with the Supreme Court, you're out of the justice system. Do whatever you want to do then, but you're out of the justice system in 1 year. Take this as one agenda reform and life will change. Country will change. बिकॉज जब जस्टिस होने लग जाएगा ना, जब हर इदारे को पता है कि अकाउंटेबिलिटी होगी, हर एक को फैसला मिलेगा, विद इन अ वीक, 10 days, 2 months फैसला हो जाएगा, सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाएंगी. Every institution will start functioning in accordance with law. We have the wonderful constitution here, we have wonderful laws here, we just need to put them to practice, you see. And if there is proper accountability, and the only place you have accountability is the courthouse. So courthouse has to function. और आपको फैसले मिलने चाहिए जल्द से जल्द. जब ये शुरू हो जाएगा, सारा मुल्क ठीक हो जाता है मेरी नज़र में, कोई फिक्र ही नहीं है. So that being the objective, and the second objective is that we're trying to do this not for any commercial reason. I mean, I'm sure there's money attached to all this, which is very good for you, but I'm more into the social impact, you see. That's where I come from. My background is not about money, and I'm not about talking about money. Money will come to you if you come up with these softwares and applications and all that. What matters to me is, are we changing the life of the person, a Pakistani, की जिंदगी चेंज हो रही है सारी, वरना तो सब अंग्रेजी है. अगर ये T4JF and all these applications are not changing the life of an ordinary Pakistani who wants to come seek justice, we failed, obviously. We failed. So हमारा objective ना भूलिएगा. Whenever you sit down to draw up or design or go to the drawing board and try to design whatever app you want to do, please think that you're doing this to make sure that an ordinary person gets relief. An ordinary person who does not understand all this, who's not probably here. We're doing all this for a person who's not here. जिसके लिए हम ये सारा सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए उसकी जिंदगी में चेंज आनी चाहिए. So whenever you're measuring this system that you're coming up with, when you're evaluating this system that you're coming up with, make sure that it actually changes the life of a person, वरना उसका कोई फायदा नहीं. I'm the last one to talk about profiteering out of all this. I am into it because I think it'll change the life of people. That is important. Having said that, you see, let me just take you कि करना क्या चाहिए. एक assumptions 2-3 दिमाग में रखें. I'm talking about to all these young innovators who are going to be designing things, and you know, all these successful lawyers who are sitting here and their minds are required. ये जो senior lawyers भी बैठे हैं, इनके ideas चाहिए, इनका experience आपको लेना है. But I'm addressing the young, you know, techies as the word goes. आपको ये समझना है कि when I talk about the courthouse, and I'm presenting a problem to you, I'm doing this to all the startups who are sitting here, to all the venture capitalists who are sitting here, कि ideas क्या है, change क्या करना है, देखना किसके लिए, अगर उसके लिए कुछ ऐप बना सकते हैं, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो बनाइए. और वो क्या है, वो कोर्ट हाउस है. लेकिन कोर्ट हाउस की कुछ assumptions और problems मैं आपसे बयान कर दूं जो हमारे सामने हैं. Litigation all over the world is sluggish. This is a given fact. We need to change that, but we have that assumption in mind. It is sluggish. Lawyers and judges and the system itself is very conventional. They're not open to change. I felt that at the Lahore High Court when I was the Chief Justice. I had a big problem
making the change management. Change management is an area you need to be very careful of. Change doesn't come so easily in the legal sector because vested interests पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा vested interest हैं. We wanted to bring in an enterprise system at the Lahore High Court, and we faced problems from the bar. We were bringing a system which was far more transparent and efficient. The bar said no, there was a problem, whatever, they opposed it. Whatever could be the reasons, but there were vested interests ko dimag mein rakhiye ye honge. There are mafias here or there operating who want the system to go on the way it is going on. You have to break that. Keep that in mind also. These are some of the assumptions of the factual positions on ground which you must keep in mind before you set out to design a new software or a system for this new courthouse that we're talking about. Confidentiality and security issues are very important. How would a private sector company come forward and start talking to us? There are confidentiality and security issues. We need to sort of look at that. But overall, it is the transparency and openness which affects a number of people, and that you must keep in mind. You must keep in mind that we're talking about 2.2 million cases. अब ये courthouse का मैं आपको ज़रा area और quantum बता दूँ. We're talking about 2.2 million cases in this country. We're talking about 200,000 lawyers in this country. We're talking about 5,000 judges, and if you just say 2.2 million cases हैं, अगर एक party भी है दोनों में तो 5 million people are accessing the courthouse, because अगर एक party भी है, then we're talking about government, then we're talking about statutory organizations. You can imagine millions of people, not to mention the staff and the court people who are working behind the court. So thousands and millions of people in a way are accessing this courthouse. And how could it function manually? It has to move on to some technology, some very smart technology. Otherwise, that ordinary person who's accessing this system is not going to get any relief. So this background is important. So now when we start off, we see what are the areas. Now, first of all, सबसे पहला जो चीज़ है, वो courtroom तो कभी देखें जाके आप. Have you seen a courtroom? Is that courtroom conducive for T4JF? Can we start modeling that courtroom here? क्या उसका furniture, उसका हालात देखें? Is that a courtroom equipped for the modern technology, for the modern world? Does it have internet access? Does it have monitors? Does it have video linking system in it? Does it have the state-of-the-art technology embedded in the courtroom? We don't design courtrooms like that. Our courtroom is a कमरा बना दो, 4 कुर्सियां रख दो, ये courtroom है. So पहले तो infrastructural design को जरा देखें. And if anybody could propose things, I'm all ears, because we need to get ideas and share ideas amongst ourselves. I think the courtroom, first of all, needs to change. Go have a look at courtrooms outside, how tech they are. You see how deeply the technology is embedded in the courts. So our court structures, and I'm not talking about the Supreme Court or the High Court. उधर भी problems हैं. I'm talking about the trial court, the civil court, जिधर सारे मुकदमात हैं हमारे. So first of all, जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, सोचें कि how do we change, redesign, refashion, remodel our courtroom. पहले तो वो देखने वाली बात. Second चीज़, let's get into this e-justice system की हम बात करते हैं. What do we mean by it? We need to start thinking that every time a case is filed, we start capturing as much as we can from out of that file. We need that data. और बिल्कुल सलाउद्दीन ने सही कहा, data का अभी हम उस phase में हैं पाकिस्तान में. We do not have data. I cannot sit down and make a strategic decision in my court. What is the reform that I want? I don't have data. I have data which is dependent on this manual information that is sent to me from here or there, and I can't check its veracity either. So, हमें पहले तो ये देखना है कि आप data capture क्या करते हैं. You need to start capturing things like age, ये औरतों के केस हैं, बच्चों के केसेस हैं, कंपनी का कौन सा केस है, उसके अंदर फाइन ट्यूनिंग करते जाए. You need that data tomorrow to understand what kind of cases do you get, how many cases do we get in a particular district on maintenance, why are we getting these many cases in Sindh, why are we getting so many cases on this particular area, and then we can sort of talk about reforms and say कि Sindh में ये problem क्यों आ रहा है, पंजाब में ये problem क्यों है. That will only come out of the data. So data कहाँ से आएगा? The minute you start filing cases, which is we talk about e-filing now or e-justice system, whatever you may call it, let's start capturing more data. We have a very basic linear data capturing at the moment. As soon as the case is filed, we need to expand on that.
Once we have that data, then we can start playing with it. We can start looking at what categories to make, and then we go into the area of case management, which I'll talk about. वो statistics हमारे पास आएंगे और हम आगे चीजें कर सकते हैं. एक और चीज जो हो सकती है कि what is the question of law this case is raising, and I'm talking about High Court and I'm talking about Supreme Court. AI का आना बहुत जरूरी है. It hasn't come to our courts yet. Artificial intelligence must look at this case before the judge does. And the court and the AI could tell us, actually can tell us that sir इसमें ये tax reference का case है, ये question है, ये case law है, 4 दफा decide हो चुका है पहले इन फैसलों में, ये summary सारी judge साहब के सामने आ सकती है. I don't think it's rocket science, but that system has to be developed. So before I get to the file, the AI has told me what's the question. This has been decided, sir, 10 years ago. This is the judgment. This is the question he's raised. Beyond that, I will apply my mind, of course, but this work is done, and I'm just on the ball as far as the case is concerned, rather than getting to this point after hearing arguments for 1 hour, you see. So I think AI could start reading files, start giving us a sense of our jurisprudence, कि क्या-क्या हो चुका है, कैसे क्या उसका आंसर होता है, उनके मुताबिक क्या बन रहा है, अभी तक existing jurisprudence इसको कैसे आंसर कर रही है. I don't think it's rocket science, but I'm quite sure these young innovators sitting here, who are probably waiting for dinner, but can do this, and they can easily come up with something this exciting if we can. उसके बाद अगली चीज़ क्या ज़रूरी, हमें बहुत ज़रूरी neutral fixation of cases की तरफ भी जाना है, और इस पे भी इस्लाउद्दीन also touched upon it, and I'm happy that he did. कैसे cases लगने हैं, कैसे flow होना है cases के, किस judge के कौन सा case जाना है. Come on, we're talking about a transparent system. We're talking about openness. हमारे सिस्टम में कोई चालाकी नहीं हो सकती, और कहीं किसी सेक्टर में हो, we are the first sector that has to start without, which has no चालाकी in it. It has to be straight according to law. हमने openness लानी है, transparency लानी है. हमारा टेक्नोलॉजी से बेहतर और क्या ट्रांसपेरेंसी का तरीका हो सकता है. किसी का ओवरराइड नहीं है, किसी के बीच में पर्सनल डिस्क्रेशन नहीं है. द कंप्यूटर जनरेट्स द लिस्ट, लुक्स एट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द जजेस, marks the cases automatically. किसी को कुछ पता नहीं कहाँ केस जाएगा, because we've already fed that in the system. We know who does criminal, who does tax. The cases will go automatically. कोई सिफारिश नहीं, कोई किसी के पीछे दौड़ना नहीं. That breeds corruption. So the minute the technology इससे अच्छी और क्या advantage technology का हो सकता है. I think we need to start bringing in that neutrality in fixation of cases, in making your benches, in constituting things. सब कुछ ये सारा टेक्नोलॉजी ले सकता है. हमारा सर दर्द ही खत्म हो जाता है. We just don't get into it anymore because we've just fed it into a system, and the system looks at it. सब कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये कैसे बैठ गए, इनको क्यों चला गया केस. सारा सिस्टम चल रहा है जी, ये सिस्टम हमने बनाया हुआ है. Cases are being marked. Of course, the Chief Justice in any court would have the override available for any particular matter, but generally we need to look into that. ये ज़रूरी है. उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड आना चाहिए ना. लोग परेशान हो जाते हैं, हमारा केस तो इधर लगा खारिज हो गया, उधर गया तो उसको बेनिफिट मिल गया. ये सारी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको सिस्टम में लानी है, तभी ये फ्रस्ट्रेशन भी ख़त्म होती है, तभी पब्लिक कॉन्फिडेंस आपका जस्टिस सिस्टम में आएगा. पीपल नीड टू ट्रस्ट यू, एंड दे कैन ओनली ट्रस्ट यू इफ देयर इज फेयरनेस इन द सिस्टम थ्रू आउट, एंड दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू टेक्नोलॉजी. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अगला जो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है वो सर्विस ऑफ नोटिस है. आपको पता है कि जो सिविल कोर्ट में केसेस हैं, सर्विस ही नहीं हो पाती. एंड आई थिंक जस्टिस गफ्फार आल्सो टच्ड अपॉन बेलिफ एंड ऑल. द क्वेश्चन इज हाउ डू वी, व्हाट टेक्नोलॉजी. हमने कोशिश की, हमने कहा मोबाइल फोन दे देते हैं बेलिफ को, और वो हम जीपीएस पे उसको मॉनिटर करते हैं, गया कि नहीं गया साइट पे, डिड ही गो डाउन टू दैट विलेज एंड डिड ही सर्व द नोटिस और नॉट, डिड ही टेक. हमने ये भी कहा कि आप फोटो ले लें उस आदमी का, वो फोटो भेजें. आप कभी देखें सर्विस रिपोर्ट जो अदालत में आती है, सुप्रीम कोर्ट तक इतना लंबा कुछ लिखा होता है, हमें वो मिला आदमी, वो पता नहीं उसका बेटा था, वो नहीं था, वो भी पढ़ते रहते हैं थोड़ी देर हम. Why can't it be a digitalized proper format as to what happened at that place, a checklist, and off we go, you see. We need to know that the bailiff actually moves out of the court. आपको पता है कि bailiff does not move out of the court. He just sits there and does this exercise. He has to move. Technology can move him. So please think of a technology which helps us achieve service of notice. Because दिमाग में रखें,
We want to finish this case in 6 months from trial court to the Supreme Court. We need to finish, attend to all the gaps in between. ये सारे छोटे-छोटे gaps हैं मुझे आपके सामने बयान कर रहा हूँ. ये छोटी-छोटी चीजें बीच में ठीक करेंगे, then you'll make it speedier, the whole system. फिर आप आए जी evidence की बात हुई, इस पे भी this was echoed earlier. अब evidence की recording बहुत देर लगती है. But where is the speech writing software? Why hasn't it reached the courts? Everybody's talking about it. I personally have known about it. But why isn't it getting to the court? Why can't the witness just speak and it gets recorded, it gets transcribed into whatever text that you want? Why can't we have a speech writing recording system which is in Urdu also, which is in any other dialect that is being, practiced in our country? That is another huge contribution. Innovators sitting here and all the technologists sitting here, this would be a huge, huge benefit to the justice system if we could just start recording evidence. The guy speaks and it gets transcribed. It will save so much court time that is unbelievable. और गलती भी खत्म. वो जो अपनी अंग्रेजी और उसकी बनाते हैं. So we need to have a standardized software for translation, and that will look after a lot of problems. इसी तरह judgment writing, a judge could just start we dictate judgments. Why can't they just be immediately uploaded? एकदम वो speech writer से हो जाए और उसके साथ ही मसला ख़त्म हो सकता है. I'm talking about हमारा तो इतना मसला नहीं होता जितना हम trial court की बात कर रहे हैं, because of the poor human resource support that they get. उनके और बड़े मसाइल हैं, तो उनको ये क्यों नहीं मिलता? Why can't they sit and do that? So I'll be very, I'm just asking you that if we can't come up with a speech writing process which could be given to judges who could improve this. While judgment writing also, Grammarly का आपने नफ सुना होगा. Why can't we have something like this for legalese के context में? Why can't our judgments be checked by a software? There are mistakes, there are terrible mistakes, and that's embarrassing for the system. So आप सोचिए, why can't we have a Grammarly PK whatever, which is looking after Pakistan and which is looking after legalese, you see, which is very important. I think we need to have perfectly, proper judgments that come out of the system. Then, of course, the age-old, हम बड़ी दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं, is the case management system. वो बहुत ज़रूरी है. हमें इस पे जुनैद साहब ने भी बड़ा जिक्र किया. Case management एक बहुत बड़ा area है, and it will be hugely beneficial for the system. अगर आप में से कोई केस मैनेजमेंट को देखें, केस मैनेजमेंट का ये मतलब है कि एक अदालत में 50 केस लगे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, 5 केस उसमें से हुए हैं, लिस्ट इतनी लंबी है, ये ठीक नहीं है. There has to be a mechanism which looks at what is the capacity of the judge, what is the weightage attached to that particular case. कुछ बेलें होती हैं, कुछ अपीलें होती हैं, कुछ सिविल के अपीलें होती हैं, सब एक लेवल के केस नहीं है. It requires more time, so you need to add weightage to cases and see a basket not to be prepared every day intelligently, which the judge has to be given, so that he can walk through it or go through this cause list with some sort of more clarity and with speed, and he achieves something. इन चीज़ों पे काम होने वाला है. अभी रैंडम केस लग रहे हैं कि इतने ये लगा दें, इतने ये लगा दें, ये नहीं. उसके अलावा क्वेश्चन ऑफ लॉ सिमिलर होते हैं. यू कैन मेक बैचेस, बंडल्स, which happens, but happens once in a while. The system must generate that. It should not be that the additional registrar or deputy registrar of the court sits down and starts searching for those cases because the Chief Justice got interested in that matter. No. The system must provide it. The system must generate cases like this, कि cases लगने कैसे हैं, weightage के मुताबिक, category wise कैसे लगने, जल्द चलेगा सारा सिलसिला. इसको सोचना ज़रूरी है. And if there is a nice software, there is a nice application, that will be wonderful, which will start making the court more efficient. Then we're talking about research. There can be no judiciary in any country which has no a platform for research that supports its jurisprudence. Research is so critical because ये जो हमारा पेशा है, justice sector जो है, it's all about ideas, mind you, as that's how I've understood. It's all about new ideas, fresh ideas. You can't go in circles. मैं PLD पढ़ता रहूँ, सारा दिन PLD पढ़ता रहूँगा तो मैं उधर ही खड़ा रहूँगा. अगर आपने flight लेनी है, you'll have to look at the world. You have to see what are the new things happening. How will that come to you? You're working on 100 cases a day. When will the judge going to read anything new
When does he get time to do that? So research center are important. We need to start developing. We've done that at the Supreme Court, but we need to expand it. We need to have it at every tier. I think Sindh High Court also has it, but we need to expand this. For that we also require, you know, हमारा LexisNexis चलो एक search engine हमने ले लिया, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ सोचना है कि how could we put together research? You see, I think the bench book which I think one of the innovators like Justice Project Pakistan ने बनाया हुआ, उसमें भी human rights के cases का उन्होंने resource इकट्ठी की है. इसी तरह we need to think about our own culture and see what can we do which helps our trial courts and others. Another idea which is very important, and अगर आप बना सकते हैं, हमारा ट्रायल कोर्ट कहीं मलीर में बैठा हुआ है जज, या कहीं चिन्योट में बैठा हुआ है, कहीं फैसलाबाद में बैठा हुआ है, we can't give him libraries and he can't be reading what's happening at the Supreme Court in US or Supreme Court in UK or South Africa में dignity rights पे क्या development हो रही है उसको नहीं पता चलेगा. He doesn't get the time. He probably is connected to the internet, but not he doesn't have any system or a platform through which he can get there. So one suggestion could be that why can't we come up with tablets which किसी का tablet iPad दे दे, आप उनको iPad दे दें. There is a big research center at the back which is giving them all sorts of information. एक judge judgment लिख रहा है बैठा कहीं, वो कहते जी मुझे information चाहिए, murder के ऊपर मुझे ये चीज़ें चाहिए, एक मिनट से उसको सारा research center feed कर देता है. He also through that tablet has access to the world through internet. He doesn't need libraries anymore. We need to start thinking of that. ये districts में आपको पता है कि जो law journals आते हैं ये 4 महीने बाद पहुँचते हैं ज़िलों में. क्या फ़ायदा उस वक्त तक कितने फैसले हो गए होते हैं. So it's about time that we move on to tablets, move on to e-libraries in the hands of the judges. जिस तरह ये वकील ऑनलाइन हाथ में कानून है, उनको भी हाथ में कानून दीजिए ना, जजेस को भी, कि वो आराम से फैसले कर सके और बेहतरीन फैसले कर सके. So इस तरफ सोचना है कि how do we bring research to the courtrooms? It's important. And what kind of an app do we develop? What kind of a tablet we can give to judges who are not dependent on any other source? जैसी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाती है उसी दिन एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, एंड ही रीड्स द जजमेंट. ये कहना कि सर अभी आपकी जजमेंट आई है, रिसाले में छपेगी, फिर 6 महीने बाद मेरे तक पहुंचेगी, तब तक पता नहीं कितने वो फैसले कर देगा. सो and the minute he has a tablet you can start, you know, he's bound to then read it because he'll get a notification of the judgment, he'll get it. उसके साथ साथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द टेक्नोलॉजी will help train judges sitting where they are. These academies, these physical structures, in a post-COVID also, physical structures are gone. I mean, we don't need judicial academies where people are brought in from all over Sindh or all over Punjab and आप ला के 15 आदमी बिठा देते हैं. कोई ज़रूरत नहीं. You can lecture, you can train the whole Sindh through an app. You see, by using internet. इंटरनेट का इस्तेमाल करें. इट शुड बी डीपली एम्बेडेड इन द सिस्टम. आप उसको इस्तेमाल करें और उनके इसी टैबलेट के ऊपर कोर्सेज कराएं, लेक्चर्स दें आप जजेस के लिए. मैं जजेस की बात कर रहा हूँ, दिस कैन हैपन टू द लॉयर्स, यू नो, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप जजेस के लिए प्रोग्राम बनाएं, उनका स्कोर कार्ड बने, दे गो थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द टैबलेट. Every evening that they're free, they can listen to lectures, they can, you know, groom themselves, quality बढ़ाएं अपनी. Why do they have to get selected and come to the Sindh Academy 6 months for 10 days, where then they come to Sindh, वो कराची देखने लग जाते हैं बेचारे, वो बड़े अरसे बाद निकले होते हैं, उनको वक्त ही नहीं मिलता. So I mean, I don't blame them. वो बेचारे अगर कहीं से उठ के आए हैं तो छुट्टी मनाने लग जाते हैं. So it should not be like this कि आपने ट्रेनिंग एक दिन आके करनी है. Training must be daily. You see, it just becomes part of your life. You see, you're getting trained, you're getting educated, you dedicate an hour every day, and that's what the theory is. You must read 1 hour, you know, something which you don't do every day. You should do that. That's how you are fertile, and that's how your brain sort of develops. आपको वैसे भी 1 घंटा बस अकेले बैठ के कुछ और पढ़ना चाहिए. हमेशा ऑडिबल लगा लें, कोई और चीज़ लगा लें, कुछ पढ़ें, कुछ नई चीज़ देखें. That's how growth takes place. So research is another area. Connected with this is the forensic science library, forensic science. हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज स्टिल स्टक ऑन वो 2 बंदे ने देखा हो कत्ल होते हुए और एक बस हमने देखना है कि जी उधर कोई ब्लड मिल गया है और ये चीज़ें, और उससे आगे हम नहीं जाते. अब हम सुप्रीम कोर्ट हैज advanced that and moved on to DNA being the gold standard, and we are saying that the forensic science needs to come into the courtroom. We need to understand this technology. We need to have fingerprinting, genome editing. We need to talk about
all sorts of other technologies that are there, वो उसकी मदद करें कि फोरेंसिक साइंस को कैसे डेवलप करें. यू विल सी देयर विल बी अ रेवोल्यूशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो अभी तक बिल्कुल किस सहारे पे चल रहा है, बयानात पे लोगों के, जबकि दुनिया में साइंस पे क्रिमिनल केसेस की डिसीजंस हो रही हैं. सो वी नीड टू मूव ऑन दैट. सो आई थिंक टेक्नोलॉजी, criminal law and forensic science needs to merge, and I think this forum is ideal and people need to bring that idea into it. उसके बाद आप ये देखते हैं कोर्ट फी जमा हो रही है या बेल बॉन्ड जमा हो रहे हैं या कोई और सिक्योरिटी, इसका भी सोचा जाए. आई एम श्योर ये फिनटेक का जो लफ्ज़ है या जो भी दुनिया है, आप इसको सोचें कि रोज़ाना को अदालत में पैसे जमा होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, ख़त्म करें स्टैंडर्ड चीज़ों को. वाई कांट वी डू इट थ्रू एन ऐप which is actual banking transaction, which is actually more secure rather than things which are fake and presented to the court. तो इसकी तरफ भी ख्याल जाना चाहिए. अब हमारा जो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे पास डेटा नहीं है, जिस तरह मैंने पहले कहा. एक चीज़ जो आई थिंक once again somebody touched upon it earlier, technology can help collect data on lawyers. I should have an application. Suppose हमने elevation करनी है हाई कोर्ट में, तो एक तो ये है ना कि इसका पता है, इसको देखा है, उसको देखा है, इसको जानते हैं, चले ये हमने हमारे सामने पेश हो. But I think why can't we make it more transparent? आप बरतानिया जाएं, people apply, they say we could be a judge of the high court, their application is made and they look at the application. So why can't there be an app which has data of lawyers, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनकी क्या क्या judgments हैं, क्या है, and we can just, the system could look at them, you see, and that would help us elevate perhaps one of the best judges, one of the best lawyers who could be, doing work elsewhere. So data collection is important, और मेरा ख्याल में ऐसी भी कोई ऐप हो सकती है जिसमें lawyers के बारे में डिटेल्स हों, जो हम देख सकें कि उसने कितनी जजमेंट्स उनकी रिपोर्ट हुई हैं, कितना उन्होंने काम किया, किस एरिया में काम करते हैं. This is helpful. If not, that could not be the solitary factor perhaps for elevation, but would be very useful. So technology comes in handy in doing that. Similarly, you could do that for judges also. I mean, judges need to, you could have data on judges or judgments they're coming up with. That's access. You see, people get to know what the judges are doing, what kind of judgments they deliver. That is another data system that can be developed. But what I'm coming to is, देखिए एक बांग्लादेश ने ये शुरू किया कि सिविल सोसाइटी में उन्होंने देखा कि कैसे कोर्ट में केसेस अगर स्लगिश है, बड़े बड़े केस नहीं चल रहे, तो उसको मॉनिटर करना शुरू करें. तो उन्होंने ये कहा कि ये केस लगा था, अखबार में लिखने लग गए कॉलम कि ये लगा था, ये फिर नहीं लग रहा, ये क्यों लेट हो गया है, बस सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं. And everybody started watching why things are slow, and then that sends a message to the judiciary also कि इस तरह नहीं होना चाहिए. So अगर हमारा system ऐसा software बने, civil society which starts monitoring important cases or all cases कि adjournments कितनी हो रही हैं, क्यों ये डिले हो रहे हैं केस, ये लगा था, ये क्यों नहीं आगे चल रहा, आज फिर डेट हो गई है. There has to be some sort of a reaction कि किस तरह आपका जस्टिस सेक्टर डिलीवर कर रहा है. अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं है तो एवरीथिंग बिकम्स, यू सी, यू बिकम वेरी कंप्लेसेंट and things get, they don't work. So active civil society through technology can start monitoring us, and I'm saying that monitor us. Look at what we decide, how long it takes us to decide, how long is my decision pending. Yes, I think you have the right to ask me, कितने अरसे से ये pending पड़ी हुई है, क्यों नहीं decide हो रहा. Not in so many words, but through technology, you can start raising these things, which would be important, a good check on the judiciary also. उसके साथ साथ for the lawyers, I think there has to be an app called adjournment.com or something. Adjournment is 80% of the problem in our justice system. अगर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें 80% एडजर्नमेंट्स का एक स्लगिशनेस को जो ऐड करता है, तो इसके बारे में कुछ करें, आपस में करें इस बार, बट देयर शुड बी सम टेक्नोलॉजिकल आंसर टू दिस. व्हाई कांट वी स्टार्ट ट्रैकिंग द केस एंड सी व्हाई इज दीज एडजर्नमेंट्स गोइंग ऑन. व्हाई कांट वी स्टार्ट फ्लैगिंग केसेस जिसमें एडजर्नमेंट्स 10 से ज्यादा हो जाती हैं. व्हाई कांट देयर बी अ पोर्टल शोइंग दिस. जितनी आप ओपननेस करेंगे ना तो ये चीज़ें नज़र आएंगी, ये पता चलेगा, क्योंकि किसी को कहने से तो एडजर्नमेंट्स ख़त्म नहीं हो रही. बाहर से भी बात कर ली तो वो हर एक के अपने मसाइल हैं, नहीं ख़त्म हो पाते. लेकिन कोई पब्लिक, जब तक ओनरशिप पब्लिक में नहीं जाएगी, पब्लिक इसके बारे में बात नहीं करेगी, ये चीज़ें कर्टेल नहीं होंगी. सो वन आइडिया कुड बी दैट देयर इज एन ऐप अबाउट एडजर्नमेंट्स दैट सॉर्ट ऑफ टेल्स पीपल व्हाट्स हैपनिंग.
वो होना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह नोटिस हम के भेजते हैं, अखबारों में भेजते हैं, पब्लिकेशन देर लगती है, वो नोटिस के पॉइंट पे ही मेरे से रह गया था। उसमें आप एक पोर्टल भी बन सकता है, ऑनलाइन पोर्टल विच इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, लाइक ज़मीन.com ऑफ जस्टिस सिस्टम, जिसमें आप अपना पोस्ट करें कि जी ये अखबार इश्तिहार दिया, मतलब अखबार इश्तिहार की जगह वो हो जाएगा कि पब्लिकेशन हो गई है, द पर्सन मस्ट कम एंड अटेंड टू व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक दैट पोर्टल कुड ऑल्सो be very useful in getting people together. उसके बाद हम सारे केस फैसले नहीं कर सकते। 2.2 million cases cannot be decided. Please remember that. It's not possible with the current system. So हमें please move करना है towards ADR. It has to be so. We have to move towards mediation. ये नहीं हो सकते फैसले सारे अदालत में बैठ के। मीडिएशन ज़रूरी नहीं है जज कराए, मीडिएशन आपका पोर्टल भी कर सकता है। मीडिएशन आपकी ये वकील ऑनलाइन को आप मीडिएशन ऑनलाइन कर दें तो ये भी तो हो सकता है ना, एक अच्छे क्रेडिबल वकील साहब बैठे लोगों की सुलह कराएं, इससे अच्छा और वैसे क्या सेटिस्फैक्शन हो सकती है कि लोगों के मसले हल हो रहे हैं। सो थिंक ऑफ दिस ऑल्सो, इट कुड बी अ प्राइवेट सेक्टर मीडिएशन ऑल्सो। वी ट्राइड दैट इन द कोर्ट एज अ कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन विच वी वर्किंग ऑन। बट थिंक ऑफ टेक्नोलॉजी, लोगों के मसाइल हल करें टेक्नोलॉजी से, कैसे कर सकते हैं, दैट इज अ चैलेंज विच आई लीव टू यू, और आप इसको सोचें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं और क्या चीज़ें ला सकते हैं। उसके अलावा प्रिजन की बात हुई है, बिल्कुल सही बात है, हमें टेक्नोलॉजी से वी डू नॉट, वीडियो लिंकिंग इज द बिगेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू द सिस्टम एज आई थिंक। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो लिंक शुरू किया है, आई एम श्योर द हाई कोर्ट्स आर आल्सो डूइंग इट। वी नीड टू टेक इट डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप घर बैठे जहाँ भी बैठे हैं आप आर्ग्यू कर सकते हैं, नो एडजर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट उधर भी खत्म हो जाता है। इफ़ यू हैव दिस वीडियो लिंकिंग सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अक्रॉस द बोर्ड, बहुत ज़रूरी है। और यही आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है एक्यूज को प्रिजन से, वो उधर ही बैठा रहे, वो उधर पेश हो जाए वीडियो लिंकिंग पे आपके साथ, उधर लाना ले जाना। ये बिल्कुल सही कह रहे थे जो प्रिजन से आए हुए थे कि लाना ले जाना केस नहीं होता है, एडजर्नमेंट हो जाती है। वीडियो लिंकिंग नीड्स टू गेट मोर डीप इनटू आवर सिस्टम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डू दैट। सो ये कुछ गुजारिशात थी मेरी जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सिस्टम में प्लीज़ लाएँ और टेक्नोलॉजी के तहत कोर्ट हाउस को ठीक करें। जो अभी चीज़ें हमने सारी देखी हैं, जिस तरह मैंने कहा है, देर वेरी गुड, देर वेरी रिफ्रेशिंग, बट मेरी स्टोरी में वो एपेटाइजर्स का दर्जा रखती हैं। मेन कोर्स पे आप नहीं आए, मेन कोर्स पे चलेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन मेन कोर्स जो है ना वो उसको डील करें। वो मेन कोर्स कोर्ट हाउस है, लिटिगेशन है। और आई विल एंड विद द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर, जूलियस सीजर, माय फेवरेट लाइन्स तो ज़रा सुन लें। देयर इज़ अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन which taken at the flood leads on to fortune. Omitted all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serves or lose our ventures. Go for it. Thank you.